Yeah, there's a very strange sense of terror that comes from knowing exactly what's going to happen to you. There's a strange sense of calm that comes from it also, but in the middle of the night when you can't sleep, sometimes you feel happy knowing what they're trying to do to you, and sometimes you feel terrified knowing what they're trying to do to you. I think I'm very happy. Every single podcast I did previous to this, I hammered the point home and I made it very clear that they had the intention of trying to put me in jail. I said there's 3 lives. They try and cancel you and slander you and destroy your name. They don't just want you to disappear from the internet. They want you to disappear from the internet in a cloud of shame. They have to shame you, which is why they chose the crimes they did for me, and it's why they usually choose the crimes they choose, because it's heinous. They want to shame you, and they want you to disappear with your head facing the ground and never pop up again. Obviously, they attempted to cancel me, and I became more famous than ever before. I even said to you on your podcast, and I said on other podcasts, I said, I think they made a mistake. I think when you have power and you overuse it, what happens is a rebellion. That's how a revolution starts. When you have power, you have to be very, very careful with how you use that power. The second you overuse it, there's a revolution, and we're in Romania, so they know all about that. That's exactly what happens. And I said at the time, I think I was a mistake. I think they made a big mistake canceling me the way they did. And then the second time, the second life, which I described as they try and put you in jail for no reason. Here we are in the current scenario. I knew it was going to happen. And the third one is they put a bullet in your head. So we're going to have to see how the second life plays out. And yeah, I mean, when this is all over and I win the court case and I get the not guilty, I won't be smiling. I'll be walking out the courtroom with my head on a swivel. That's the kind of life I'm living now. I'm going to be thinking, oh, okay, so their second attempt failed. Now what? Like, do I want to fly private anymore? Do I want to go that place anymore? You start to think about these things. Like, do I want to do these things? A lot of billionaires dying in plane crashes. It's strange. So it's scary, regardless of how it plays out. And I guess you just have to go with the punches and see where it lands. And God has a plan for me and for all of us, and we're just going to see how it ends up. I want to make it very clear, and I make it clear on absolutely every single podcast, I would never kill myself. I don't care what they say. I don't care what video they show you. Never under any circumstance would I kill myself. It's haram. Never. I don't care if they put me back in the dungeon, solitary confinement by myself for the rest of my human years. I would never kill myself, ever, ever. So if that ever happens, God forbid, do not believe whatever garbage they tell you. The chance of me killing myself is precisely 0. They have to damage my influence. They have to damage my influence. They can't sit there and let me be influential because I'm saying things that they don't like me saying. And there are people sitting around going, he's saying things counter to our message and counter to our narrative. Get rid of it. And they have a pretty standardized playbook. And this is probably one of the first times in history where their playbook just isn't working. Cancel him. He's still around. Oh, well, lie about him in the news. Just say he touches chicks. Well, no one believes it. Oh, all the comments are on his side. Everyone's calling us liars. Okay, then do it again. Then do it again. Make up a new girl. Then do it again. Find someone else. Yeah. And they keep attacking me with the same weapons, but the bullets are bouncing off. And that doesn't give me a sense of calm. That doesn't make me think, ha ha ha, I'm invincible. It makes me think, uh-oh. It makes me think, uh-oh, because human life is cheap at the top. It's very cheap. It's interesting, because sometimes I analyze myself and think, why don't I just do that? Why don't I just disappear? You know, I don't need money. I don't need fame. Why don't I just disappear? And then you have to, I was saying this to my brother, and he was like, well, Genghis Khan didn't need Vienna. Some people are just wired that way. Like, Vienna's a long way from Kathmandu. Sometimes that's just the way it is, or Ulaanbaatar, I apologize, to the capital of Mongolia. That's just the way some people are. If I see injustice, and if I see things which I believe to be false, I feel like I am obligated to say the truth. I can't explain why, even if at my own detriment. What am I doing this for? Like, it's to the detriment of my life. And I've had these conversations at length with the people close to me, and we're all saying the same thing. It's always been the same way. Humanity's always been the same way. There's been a select, small, few good men up against evil, and evil always outnumbers you. Evil always has more money than you. They always have more power and more influence than you. If you play any video game, when you get to the end boss, he always has more life than you. He always has more hit points, but you're the good guy. And it's kind of like, it's never been any different. At any point in human history, there's been the good guys up against the forces of evil, whatever they were of the time, and you've always been outnumbered, and you've always been supposed to lose. Well, instead of saying who, I will say, what I will start by saying is what they do. And what they do is they control information. And we now live in an information society, and by controlling information, they control how people think and act and react to things. That's all they have to do. They have to control information, and they have to be very selective with what they allow you to talk about and what they allow you to discuss and what they don't. And once they can do that, they can keep you bickering about garbage, and they can control the sensitive information, and then they run the world. So
having all the information controlled and having this hard barrier on what can be discussed, that's how they can purport absolute fallacies. I think now it's been a couple years, we can probably talk about it. They psyoped the world into believing they should be afraid of the common cold. They psyoped the world into this. And if you think about how difficult that would be to do, how difficult would it be to psyop the entire population of Earth? Well, what you do is you just lie on repeat, and you don't allow anyone to say anything counter to it without hurting them the same way I've been hurt. And you just psyop them. It's actually amazing because now I use that exact same psyop on people. I love it. I love it. So when I sit with someone who's not matrix minded, when I sit with someone who is matrix minded, like when the BBC walked in here, I'm like, do you all have your vaccinations? Social distancing. Did you actually? 100%. Social distancing, please. And they look at me like I'm crazy. Well, how am I crazy? 2 years ago, you were telling me to do this. Now when I repeat your own worldview to you, I'm crazy. Well, if I'm crazy, guess what? You're a fucking liar, because you lied the whole time. So either you're a liar or I'm not. You know, how can I be nuts? Put your fucking mask on. If I ever talk to any of these clowns again, they're gonna be fully masked up. And I refuse. I don't care if you've had 2 booster jabs. No, I want all 6 injections. I want paperwork or get fucked. You're not coming in the house. Get fucked. I'm scared of COVID. It's dangerous. I believe the mainstream media. I'm scared. This word you keep using, PSYOP, I've never heard this word. It's short for psychological operations. Correct. Break that down. What exactly is a PSYOP? Yeah, a PSYOP is the matrix as a whole. Just like psychological operations are constant. They constantly decide how they want you to think and what they can do to make you believe that, right? There's a whole bunch of them they do. But it starts with tolerance. That's what I don't like about this whole guise of tolerance. It's not that I'm an intolerant person. It's not that I'm a bad person. It's not that I want to hurt other people. But when they keep pushing tolerance, what they're trying to say is have no standards or barriers or parameters for anything. That's what they want. You have to be tolerant. Tolerant of what? Tolerant of having your shop set on fire, tolerant of your kids being taught things you don't want, tolerant of crime, tolerant of your house being broken into. Like, tolerant of what? You're not allowed any hard barrier or any hard parameters as a man anymore. That's why they push tolerance. That's the beginning of it. That's the first stage. Once you accept absolute tolerance, well then it's the end, isn't it? I'm tolerant of everything. I'll eat the bugs. Sure. You'll tolerate everything. I'll tolerate everything. I'm tolerant. Sure. So when I say things like I'm intolerant of certain things and people think that's bad, no, you need to have standards and parameters. And that's one of the reasons they also attack me. I say that men should be allowed to have standards and parameters in a relationship and in their lives. We should be allowed to decide who we just want to marry, and we should have standards for her. They have standards for us. We should allow ourselves to have standards for her. We should have standards in what we'll accept from a government and standards in what we'll accept from a police force. We should have standards as men. But they're trying to erode all of that, because once that's gone, then your brain is completely empty. And then once your brain's empty, they can just plug in the slave program, and then it's over, right? You're a tolerant person. You're a tolerant person. Good. You're a good slave. Slaves are exceptionally tolerant. They're good for different things, man. But they both have the same basic worldviews, the same basic what's the word I'm looking for? Propaganda. The same. They're trying to hypnotize you in the same way, right? And it's all done on purpose. I think we've discussed this before, and we'll discuss it certainly a bit later, but they're trying to destroy the masculine imperative to prevent revolution. So it's all kind of the same. There's certain things I respect about each country. But it was good to certainly at a young age move around a bit as well. It allowed me to never, ever really settle in a school and make a bunch of good friends or anything like that. So I always understood, even from a young age, how to make people like me quickly, and also how unimportant the relationships from those people were, right? I wasn't a kid who's like, oh, I'm gonna miss my best friend. I was like, okay, you were my best friend for 2 years. Peace, I'm out. I was like that. So that's probably another reason why me and my brother are so close. So yeah, it was a good upbringing. I can't have nothing bad to say about it. I was just raised by the OG. My dad was a G. Big, black, chess master, huge, drinking, gambling, pimping. Like, he's just out here. He was just that guy, right? So he was like that to the end. So he was a hero. Yeah. So chess, I mean, obviously my father was a chess master, right? So I had to learn the game. He sat me down. I spent a lot of time learning it. And to this day, I have massive respect for chess. So much respect for the game. It's so much harder at that world level than people can even fathom. Unless you even play the game, you can't even anticipate how good these people are at the game. They're effectively computers. I don't think you can even be good at chess at that level without having something a little bit wrong with you. You got to be on the spectrum somewhere. Do you know what I mean? Because it's crazy how good these guys are. But yeah, chess is an amazing thing. I still play chess every day. I'm not world level or anything. I'm around 1750, 1800 elo. If anyone knows chess, that's what I am. But yeah, would that be considered better than average? Certainly better than average. Yeah. You know, the average player, let's say, is around 1,000 or something. Okay. But my dad was 2,400. Okay. Or 2,500. Damn. Okay. So yeah, so
I'll give you an example. My dad could beat me without looking at the board. So my dad would be in the kitchen, fucking around the kitchen, cooking dinner. I'd be in front of a chessboard in the living room, and I'd say E4. He'd say C6. Knight F3, Knight C3. God and damn. boom, and he'd smoke me without looking at the board. That's how good the best. It's insanity. Yeah. But I do think it's a good basis for life. There's certainly a lot of lessons in chess. There's certainly a lot you can attribute to chess from everyday life to the chessboard, and I think it's a good grounding mechanism. I enjoy to sit down for a good couple hours, win some games, lose some games. Yeah, absolutely. So I'll give you my favorite one first. Yeah. Please do. My favorite one is the difference between the king and the queen, right? Because the king moves one square at a time, and the queen can just zip across the board, right? So you're here in Miami, you're partying in Miami. They got all these parties right now. It's Art Basel, blah, blah, blah. You see all these chicks on a boat. For the man to get on that boat, it's one square at a time, right? He has to get a good job. He has to get his taxes right. He has to find a way to leverage credit. He has to meet the guy who sells the boats. He has to go through all this shit stage by stage by stage to finally pull off being on that yacht and having that yacht at the age of 56. A chick, what does she need? Lip fillers? Boom. Zip. On. She gets straight on. That's the difference between the king and the queen. But although the king is slower than the queen, he's the most important piece, right? The king can't die. The queen can die. The queen, sometimes you can be looking at a position and go, this is fucked up. The only way out of this is to sacrifice that bitch. Sometimes you can do it. I'll tell you a very quick story. This is a story I've never told before. When I was, how old was I? 23? When I was 23, I was dating a ballerina. She was the prima ballerina of the Cambridge Ballet School in England. And I had no money. I was a fighter, but I was coming up. I didn't really have any money. And she lived far away, like an hour and a half away, but she used to come see me, and we were good for like a year and a half. I loved this girl, yeah? And she finished ballet school. She started dancing in clubs in London. She couldn't get any ballet work. Surprise, surprise. Who fucking wants ballet work, right? So she ends up doing like dancing and not stripping, but like dancing in the club, you know. So now she's around all the London money every day. She's out dancing all the time. She's up late every night. She doesn't want to drive an hour and a half to come see me. None of this shit. So we're kind of falling apart a little bit. And she ended up talking to someone famous, David Hay. I don't know who he is. He's a boxer. So David Hay starts texting this bitch, right? Back and forth to the. So anyway, when I finally saw her again, she was like, we had an argument. She's like, well, you know what? You think you're a fighter. This guy, that guy, this guy, that guy. I'm like, look, if you're going to go fuck idiots, at least do it for money. And she's like, what do you mean? I was like, well, if you're going to go fuck idiots, at least get paid because they don't give a fuck about you. Like, if you're going to play this game, at least do it for money. Right. So I had this argument with her back and forth, and I explained to her that these men are just going to use you. If you're going to do it, at least get paid. And when she left the house, Tristan said, why are you telling her to fuck other dudes? I'm like, no, I'm just understanding that in my chess position, I've lost this game. Right. The game is done now. Just sooner or later, she's out. All we do is argue. She's in the club every night. I'm just trying to say, before she leaves, maybe I can get a little bit of money. Yeah. Yeah. That's the queen sacrifice, right? Right. We broke up 3 months later. I don't know if she fucked him or not, or who she fucked. I don't know. I never spoke to her since. But that's kind of the analogy you have to be able to apply to life. Sometimes chicks got to go. Yeah. Sometimes they have to go to save the king. And too many dudes, most of the time, men truly lose at life is because they've attached themselves to a queen and they won't let her up. They won't sacrifice her. No matter what, I promised I'm going to stick by you. This, our marriage vows, no matter what. And they just stay on that sinking ship till she eventually leaves his ass. Even worse, what most queens do, I don't want to use queens, what most women do nowadays, especially in the West, I see women getting their men in trouble all the time. You know how many times I've seen chicks starting fights for their dude to have them off
All right. So, man, you all know this. Today is what we have today. Today we have first Ramadan, and I'm on fasting, bro. I'm on fasting. Yeah, I'm on fasting. That is why I'm speaking uh, very low. Don't wanna don't wanna waste my energy just in the morning. Yeah, this is what I wanna do. I don't wanna waste my energy. So let's see the charts. On Euro USD we have nothing. Let me see CAD JPY because we used to look at the CAD JPY also. And the thing is, we are not looking at CAD JPY anymore, so that is why I really want to see new templates. We are looking at the 4-hour time frame. So okay, okay, so as we can see, this is the higher high, lower low, lower low, lower high, lower low, lower high. So I think that would be a good idea. If we can get the resistance, we can go for a sell. And on Euro USD is a bullshit. GJ, I'm looking for Canada to close above this range so we can retest that area before continue to go down. And because if we, the thing is, let me show you the previous daily. This is the previous daily high. So once we break the high of the previous daily, that means we can easily get up to this level. Yesterday I got a very good trade, but yeah, yesterday that was the trade that I took. Where is that? It was somewhere over here. There was the target. So stop loss was really okay. Stop loss was really, I think 17, 18 pips. 6, 17, 17 pips. So if someone have a stop loss 17 pips, what it has to do, I think that stop loss should be a pretty good stop loss. 12, 13 pips stop loss. We can also go with 40 cents, and if we secure 25 pips, 25 pips means 26 pips mean, no, 24 pips means 1 to 2 hour trade. And also buy limit, yeah, that was the idea that I gave. It just, oh, break even point was over here. So it came up to the break even point, and then it rejected. And this is where you should be break even, or you should secure your position or partials or whatever for like 57 pips. Yeah, 57 pips. And I think today that was the trade idea that I gave yesterday. For today,
Like, no. I can't give you anything today because today we have CPI, man. Today we have CPI. Think this candle did not break the low of that candle. Uh, Maybe a little bit. Yeah, I was looking at the 1 minute time frame to not break the high of that candle and then give me a trade. But yeah, if I have money in IC markets, I think that would be good. I can easily make some good money in IC markets, but in because with 2-3 pips spreads can't make money on DX trade, bro. Like I can't take this kind of trades, so that is why I most of the time I avoid to take that kind of trades. So spreads on DX trade now is 1.6, 1.5, 1.6. On pound yen 1.4, 1.7. So and we also have to pay commissions. So this goes like to 2.5 pips. Just imagine, man, if you get 15 pips, out of 15 pips you'll pay how much? You'll pay 2.5 pips in spreads and commissions and you only get 12 pips. But when you lose the trade of 15 pips, you will only get you will lose 18 pips. Because of this, okay, this kind of flip bearish. So this is what I was looking for. I was like, yeah, it can easily come down. Like, yeah, look at this, man. Look at this. So with the with that kind of stop loss, I think we can. So so one thing we all know this, we are not taking the trade on the next 30-minute candle. Why? Because there's a very less chance this candle will close below the range. Or if we have to take the trade on the 15, this is where I will look to for candle to close below this range. If we have to take the trade on 1 hour time frame, I think this is a good 1 hour. And one more thing that I wanna say, look, all the 1 hour candles, not even a single candle closed bearish. One more thing, I want to tell you one more thing. If we look at the CPI numbers, they are looking for 3.1%, and that is not the Fed goal. Fed's goal is to bring inflation down to the 2%. So if the inflation is not at 2%, that means we are not looking at the rate cut bets early. So okay, so yeah, that 1 minute was a trade. That let me show you that 1 minute.
That 1 minute candle closed bearish. It came up, create a top wick. This is where we should get into this trade. This is like 1.5 pips away. Let's add 1 pip spread, 2.5, 2.3 pips or 2.4 pips in spreads, zero point 0.8 pips in commission. Total we have like 3 pips. Let's see, 3 pips. We came down for 14 pips. And this is not the end. This is the end. This is where we can bring our stop loss above this structure, 1 pips in profit. So why 1 pip in profit? Because if we hit the break even, we can easily cover our commissions. Yeah, we can easily cover our commissions. This is what I'm talking about. This is what you have to understand. But because I don't have a good spreads on my DX trade, so I can't. Okay, look at this. As I said before, this is very unlikely we can see a candle. It closed below the range. Yeah. And also if we look at the 1 hour, previous 1 hour is bullish. If this 1 hour closed below the range, then we have this area on my eye. Let me see the 15, how it looks like on 15. Wow, amazing. Because I didn't even look at the 15. I just go to the 1 hour and I was like, yeah, this is a thing that we have. Because this is a wick fill. So once we get the closure below the range, we want market to price in. We want market to price in for the CPI, and for today, after looking at the numbers, I want this to price in towards the downside, not for the upside. So if the next candle close above this range, we may go for a buy, but I'm using the word may, not we will. So there's a big difference between may and will. So we don't have any. Okay, we have one like man, beautiful, and I think, yeah. Mm. So man, I'm on fasting today, and believe me, can't can't speak for straight 3 hours. I think that would be good if we do the stuff like if I speak after every 15-minute candle close. Yeah. Once we get into the trade, I'll tell you, hey man, listen, here is my sell stop. Hey man, listen, here is my stop loss. All that good stuff. So if you guys like, man, like, I can't say any word, but
If you guys understand my situation, that would be good.
Oh man, this candle is about to close, and I think we will have a good opportunity for us to get into this trade. Yeah, we have a support on the 30. Looks like we just reject from this support, but on 15 this is not a, oh okay, let me see. Okay, this is like nothing, but this is good. As I said before, I'm looking for a salary play. Last 5 minutes did close bullish. Okay, yeah, I think if we can have a 25 pips stop loss, stoppy loss. But now this candle is closing like a strong bullish, not like a salary play candle. So if it close like that, what we will do, we'll do like this. We'll wait for the next candle to came up, close back inside the range, and the next candle to came down, close below, and then we can go for a trade. Yeah, this is our, so this thing now gone because I was looking for this candle to grab the liquidity before continue to go up, but it first it continue go up before grabbing the liquidity. So yeah, I don't think so. I don't think so. I'll go for that trade at all. At all. Yeah, look at this. Let me see what. Okay, this kind of close is strong bullish. If you have to take the trade on the 30, that makes sense. If this candle, but I would say that is a risky trade. I would say that. Yeah, I would say that because previous 15 is a, you all know that previous 15 is a good bullish candle. Yeah, man. Yeah. Oh man. So
Yeah, 1 hour, 30 minute looks good, but we also have to understand one more thing. If we have to take the trade on the 30, here is the here is the support on the 1 hour. Here is the support on the 30 minutes. So what we can do, like where we don't have this support on the 15, but what we have on the 15, this thing close a strong. Look at this, the way it is moving up, man, the way it is moving up. So my plan, like I always, I'm not saying that, hey man, listen, I know everything, but I know how to adopt the markets. Yeah, I know how to adopt the markets. GJ is like nothing for me until we get a retracement, until we get this stuff over here. Uh, Other than that, I'm not looking for anything. Gold is whatever. So let's see, man, what will happen over here. I'm going to mute myself one more time.
Hello. कैसे हो ब्रो? अली आवाज नहीं आ रही थी मेरी। हाँ आवाज नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। कैसे हो ब्रो? हाउ आर यू? I'm fine, man. Today is like first fast, and let's see how it's going on. Yesterday was my first fast. Yeah, actually, like what we can do, man. Like our our ulama tabqa gives us fast today, so we were like, okay, we'll take it. It's like every year Pakistani people almost eat one day of its fast, you know. Yeah, So we decided to take the fast one day earlier. So yeah. uh, देखो So ली what's the plan position for ली कोई today? नहीं. Plan was like I was waiting for GJ to give me a salary play so I can go for a buy. Other than that, I wasn't looking for a sell. I wasn't looking for a buy. And then when this 15 closed week bullish, I was like I can't go for a sell. I can't go for a buy. So then I don't know why this wick happened for like 42 or 43 pip. And for gold, I was looking for also salary play on gold on the 15, but the way 15 closed, it wasn't the salary play, it was a strong bullish candle. So if I look at the 30, Yeah, it shows us the fake out. yeah, and if I look at the 30, 30 said to me, hey, like we are rejecting from that support. So if this 30-minute candle gives me a salary play, I think that would be good idea. So because 15 minutes, and we also have 11 pip wick fill. In that wick fill, we can move our stop loss to break even. And previous 1 hour is bearish after a bullish candle, so we create a new resistance on the 1 hour. If 30 gives us a salary play, so we can go for a sell, and I'll move my stop loss to break even as we fill this wick, and I'll hold this trade at least for like 21.72. let me see wait a minute. I will hold this trade 21.72 at least. Yeah, once we tapped into this 21.73, I'll maybe close half or close full, and we will also up like 30 pips. I think it is more than 30 pips, 32, 33 pips, or maybe I close 80%, but I will close something, and the final target should be the same, 21.71. Sounds like a good plan. Yeah, maybe gold moves earlier, don't gives us a salary play. Like for me, if this 30 close weak bearish, this is still a salary play.
But if it came more down and close with a big wick, that is not a salary play. That is like we can still get into the trade, but the problem is we have a rejection after 9 pips. Like if we take the trade, if this candle don't break its own low, we have a rejection after 9.5 pips. What is your plan? My plan is to wait for these 30 to close bullish so I can hit the salary play. If not, then I will wait for the 12 p.m. news and see what will Oh, happen. yeah, I just opened Forex Factory to see like what happened with GJ. So there was no news, but one thing I see, I was like, man, today we have a news for pound yen, like pound. They are looking for some good numbers, some bad numbers. Bad numbers. Again, bad numbers. Same numbers. Oh, they are looking for bad numbers. So bad numbers mean we may see a move down on GJ. If the numbers Yeah, came, maybe. yeah, if the numbers came exactly what they are anticipating. The CPI or Clement count change? I think this is their CP. No, no, this is not their CPI. It is like yeah, one day mm, this is like their NFP. Mm-hmm. Is it? Yeah, yeah, their NFP name is claimant count change. Mm-hmm. I don't know that from. Yeah, I was like I always say this word climate. I was like, and I every time this news came, I was like, man, like out of all the world, the only country that is concerning for climate is Britain. Then I was like, no man, this is not climate, this is claimant. Hmm. So and I think my friend told me this is like uh, NFP for them. And if we look at the NFP day, we had three news for dollar. One was average hourly earnings, non-farm employment change, and unemployment rate. Mm. If we look at Mm-hmm. today, we have maybe same thing. Average earnings, unemployment rate, and claimant count change. So you can see all three news that we had on CPR on NFP for gold. Like if this 30 now close bullish, then it make no sense. After Yeah. after grabbing this like 14 pip wick, I think if it close bearish, that make more sense. But if it close bullish, that make no sense.
That is like there is no entry, but the highest probability is still we will go down as long as we are below this range. Oh, oh. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे कोई अल्लाह का बंदा पहले रोजे वाले दिन फोत हो गया। ओके Hmm. So man, I'm fearful to speak like straight 2 hours. I was like, man, this is my first day of fasting and maybe. Ali, are you here? Mhm. DJ was afraid to go down. We have 1 minute left for this candle to close. Early. Hello, bro. Ah, I think you were not on the Discord. Yeah, I was Yeah, outside at some work, so yeah. I was talking with someone who now was I'm back. who were not existed on the Zoom. I was like, man. So I was saying I am afraid to speak 3 hours today, straight 3 hours today. Maybe this is the first day of fasting, and maybe Right? like at Asr, I'm like, no man, why I speak Mm, 3 hours? That is I started the stream, I speak thank God. 30 minutes, then Mm-hmm. I was like, guys, listen, I'll speak after every 15-minute candle. So 30 closed Yeah, bearish, but not it does not make any sense if you look at the if 30 minutes, you because know. like if we have to take this trade on the 30, we have to look at the 30-minute, and 30-minute is saying we are at support. Yeah, it's rejecting. Yeah, but like if we look at the 1 hour, if this 1 hour close below this 1 hour range, then we can fill this wick, and that is still, oh, 58, 59 pip range, bro.
CAD JPY. EURUSD may gives, but we have a CPI day. I think the best trade would be on Yeah, CPI. yeah. After I'm look, also thinking that we should have our shot for the CPI, yeah, Mhm. Did you got anything yesterday? no, No? Yeah, but till DJ moved to it like late DJ 7 बजे पता नहीं क्या था. 7. But there was no entry. I was looking for a fake out on 30 भाई minute. पाकिस्तान का बेड़ा फिर से गर्क हो गया ना. पाकिस्तान का बेड़ा फिर से गर्क हो गया. वो कैसे? ये ऐसे खुली सरदारी फिर से सदर बन गए. यार तुम्हें पता है अली पाकिस्तान को ना किसी ने भी नहीं सही करना. हमें लगता है ना, हमें तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि कोई भी नहीं सही कर सकता इसे. जिन्हें लगता है ना कि इसे इमरान खान सही करेगा, भाई इमरान खान सिर्फ ये जंग लड़ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट मुझे अपना बेटा बनाए. तो और ये एक रियलिटी है, जो नहीं मानता ना माने. तो जरदारी या नवाज शरीफ या शहबाज फेवर शरीफ, तो ये सारे इररेलेवेंट हैं, ये प्यादे हैं. तो हाँ. पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बनना. अगर किसी को लगता है ना कि ये इमरान खान हमारे लिए जिहाद कर रहा है, सर जिहाद नहीं होता ये, इसे जिहाद कह ही नहीं सकते. वही बात है ना कि इस्लामिक टच दे ही रखो ताकि अवाम थोड़ी गर्म नरम रहे. ये वही गेम खेलते हैं नहीं सही इस्लामिक. बात है. ये कोई इस्लाम भी प्रेसिडेंट आ जाए ना, ये मुझे जरदारी से इस पे चिढ़ क्योंकि इसी के टाइम पे हमारे इतने टारगेट किलर हुए थे ना, इतने दहशतगर्दी इसके टाइम हुआ है, कोई भी टाइम नहीं हुआ था. हाँ, दहशतगर्दी का तो वाकई उस वक्त बड़ा मसला था. दहशतगर्दी का मसला हाँ ये नवाज दहशतगर्दी शरीफ ने का आके बहुत हद तक सोल्व किया. जरदारी है बहुत बड़ी फिल्म है यार. जरदारी तो ये देख ले कि जरदारी की 4-5 सीटें होती हैं बलूचिस्तान से, और जब सदर बना 43 की 43 सीटें, 43 के 43 वोट जरदारी को मिले हैं. पता नहीं, जाके बैठ जाता है उनके साथ, भाई नीचे ही बैठ जाता है उनके. जरदारी को एक बार एंकर ने कहा था, लोग कहते हैं कि एक जरदारी सब पे भारी. तो जरदारी कहता है नहीं, लोग गलत कहते हैं, एक जरदारी सबसे यारी. सही बात जरदारी जरदारी किसी से खराब नहीं करता. और जरदारी जरदारी जो सियासतदान होते हैं ना, उन्हें खुश रखता है. अवाम तो फिर अवाम ही है ना. अवाम का कौन सोचता है यार, अवाम का लिए कोई नहीं सोचता. ये फैक्ट्स हाँ हैं, भाई, ये आवाम फैक्ट्स के लिए हैं, कोई ये सोच. फैक्ट्स हैं. अवाम पागल है. हाँ. अवाम को अपना खुद सोचना चाहिए. अवाम को रिलाई ही नहीं करना चाहिए इन पे. अवाम क्यों रिलाई करती है? अवाम क्यों कहती है कि ये मेरा लीडर है और ये आएगा तो ये कर देगा? भाई किसी ने कुछ नहीं करना, तुमने अपना खुद करना है. जो कर सकते हो तो करो, नहीं होता तो कहो भाई हमसे नहीं होता. ये ना कहो कि ये जी जेल में बैठा मेरे लिए आज़ादी की जंग लड़ रहा है. सर जेल में जब नवाज शरीफ भी गया था ना, वो हमारी जंग नहीं लड़ रहा था, वो अपनी ही लड़ रहा था. और जैसे ही उसे मौका मिला वो बाहर चला गया.
अलहदा बात है इमरान खान बाहर नहीं जाएगा, लेकिन ये है कि भाई उसे नहीं फर्क पड़ता कि यार अली, उन्हें बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता कि हम ये जो है पाकिस्तानी या जो भी हैं ये क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता। और अवाम जो है वो कहते हैं कि हम इसके लिए जान दे देंगे। भाई क्यों दोगे जान? तुम इतनी इतनी सस्ती जान होगी, तुम किसी भी बंदे के लिए दे दोगे जो कि सिर्फ हैंडसम है और जिसे तकरीर करनी आती है, जिसने तुम्हारी साइकोलॉजी पे कंट्रोल कर लिया, तुम उसे जान दे दोगे? मतलब इतना अपने आप को तुम जान किसी के लिए भी नहीं देनी चाहिए। मतलब यार क्यों जान दें हम किसके लिए यार? बल्कि उन्हें हमारे लिए जान देनी चाहिए कि हमने उनके लिए जान देनी है। हम वेले हैं कि उनके लिए जाने दें? अब वो दें हमारे लिए जान। हम उन्हें वोट नहीं देते, दें हमारे लिए जान। हम क्यों दें उनके लिए जान? हम वेले थोड़ी हैं। अवाम ने बात ही जी, खान आखिरी उम्मीद है। भाई कोई भी आखिरी उम्मीद नहीं है। खान आखिरी उम्मीद है एस्टैब्लिशमेंट दी, जिन्होंने कम चाहिए उस तो, जिन्होंने उस तो कम लेना है। और पाकिस्तान का इधर जितना की बेड़ा इधर से गर्क, जितना भी जल्दी हो सके बस निकालो अपने आप को। वो पाकिस्तान से जिंदा भाग वाली बात, क्या? वो एक बनी हुई थी ना स्टोरी कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। हाँ, पाकिस्तान से जिंदाबाद। वही। हम्म। नहीं ब्रो, ये सच है। इधर जिंदगी के लिए जगह नहीं है। मिडिल क्लास बंदे दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि क्योंकि हमें ये पता क्या लगता है? अनएम्प्लॉयमेंट की वजह मैं से। बताता हूँ, हमें हम्म, लगता है कि अली, अगर ये एम्प्लॉयमेंट देंगे तो फिर वो ज़्यादा इन्फ्लेशन और ज़्यादा हो जाएगी ना। अनएम्प्लॉयमेंट इसीलिए हम्म, है कि क्योंकि 23% टैक्स है। क्योंकि हुकूमत चाहती है कि पहले थोड़ी महंगाई कम करें। महंगाई अगर इस तरह बढ़ती गई, ये तो जो गंदम है ये 10,000 रुपये हो जाएगी, और गरीब बंदा तो नहीं ले सकता ना, क्योंकि उसकी मजदूरी तो 1,000 ही रहेगी। हम्म, तो ये सारी स्कीम है कि, और उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि पूरी दुनिया में यार जुल्म होता है। पूरी ये दुनिया का निज़ाम है, अमीर आदमी और ताकतवर आदमी कमज़ोर आदमी पे जुल्म करता है। और अब हम कहते हैं ना कि आज़ादी इजहार राय है, उधर यूरोप में देख लो, अमेरिका में देख लो, भाई कोई आज़ादी इजहार राय नहीं है। आज़ादी सिर्फ उस चीज़ की है हम्म, जो उन्हें बात अच्छी लगती है। आज़ादी का मतलब ये नहीं है। आज़ादी का मतलब ये है कि मुझे एक बात अच्छी नहीं लगती, तो फिर भी वो कर रहा है, तो ये आज़ादी इजहार राय है। अब उन्हें फ़लस्तीन अच्छा नहीं लगता, हम्म, उन्होंने क्या किया? ये जो लोग थे फ़लस्तीन के लिए कर रहे थे इhtजाज, उन्होंने उस पर वाटर कैनन चलाए हैं, उन पे पर्चे किए हैं, सब कुछ किया। और फिर ये लोग हमें बताएं कि हमारे पास तो बड़ी आज़ादी इजहार राय है, तो फिर बंदा क्या ही कहे? हम्म, इसलिए मगर तो पूरी दुनिया एक ही चीज़ है। सिर्फ स्कैम होता है आम आवाम के साथ, स्कैम होता है आम बंदे के साथ। उससे एक बयानिया दिया जाता है और उससे लगता है कि नहीं नहीं यार, ये गल्लां तो बिल्कुल सच्चियाँ हो रही हैं। लेकिन जबकि उसे ये नहीं पता हो रहा कि होता हम्म, है गेम सारी उसके साथ हो जाती है। गेम हमेशा आम बंदे के साथ होती है। सही बात है। और आम बंदा इसी बात में खुश होता है जी, मेरा MP है या मैंने जो है वो मेरे घर आया है मेरे अब्बे का जनाजा पढ़न। इतनी थक्कड़ सोच वाम की कर दी है कि वाम इससे ऊपर सोच ही नहीं सकती। अब एक बंदे ने वोट इस बात पे दिया कि ये जी मेरे अब्बे का जनाजा पढ़न आया है, उसका क्या? क्या ही वोट होगा? कैसे कैसे? मतलब जिस तरह तुम्हारे मोहल्ले में किसी के घर फोतकी हो जाती है, हम्म, किसी का अब्बू फोत हो जाता है, और जो तुम्हारे इलाके का MN है वो उसका जनाजा पढ़ने आ जाए, हम्म, लोग इसी बात पे वोट देते हैं। अच्छा। साइंस साइंस साड़ा जनाजा पढ़न आए। साईं ਤੁਹਾਡੇ नौकर है, ਤੁਸੀਂ यही नहीं समझते। साईं साकू सड़क दी है, साईं तुसा टैक्स दिता है, ਤੁਹਾਨੂੰ सड़क बहुत छोटी चीज मिली है। हम्म, तालीम, घर, सड़क, ये तो बुनियादी हकूक हैं। लोग जो बुनियादी हकूक दे के इस पे सियासत कर रहे होते हैं यार। हम्म, तो
लोगों को यही नहीं पता असल में ना, अवाम को इतना दिमागी तौर पे गुलाम बनाया है कि उन्हें उन्हें अपने हकूक का ही नहीं पता अली। सही बात। तो फिर ये कहते हैं कि ये बंदा आके ये कर देगा। देखो, मतलब एक बंदा है, अब उसे पता है कि मतलब ये मुल्क नहीं सही हो सकता, और वो हमें बताता रहा है कि मैं जिस दिन आऊंगा उसी दिन डॉलर जो है वो आधे आधी कीमत पे आ जाएगा। तो यार इससे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात भी हो सकती है। मुराद सईद ने खड़े होकर तकरीर कर दी जी, तुम्हारा दुबई यूएई में 200 बिलियन डॉलर पड़ा हुआ है चोरी का। 200 बिलियन डॉलर की सर पूरी इकोनॉमी है। 200 बिलियन डॉलर पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है 200 बिलियन? मतलब 200 बिलियन डॉलर आता कहाँ से है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि मतलब इलोन मस्क पाकिस्तान में था और उसका सारा पैसा चोरी होके बाहर चला गया, क्या हो गया? मतलब 200 बिलियन डॉलर, यार कोई मजाक है? मतलब पाकिस्तान, मतलब 200 बिलियन डॉलर की इनकी इकोनॉमी है, और ये कहें कि जी हमारा ये यार ये सारे स्कैम है, इनकी बातें वो सुनता है। मुझे एक दिन एक दोस्त कहता था कि यार देख, खान पीछे पंजाबी नहीं टुरे, खान पीछे पठान टुरे हैं। मैं कहा गल भी सही है ना, खान पीछे पठाना ही टुरना है। और मेरे पास अगर जॉब नहीं है, मेरे पास अगर खाने के लिए कोई चीज नहीं है, और मुझे एक बंदा आके कहे कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हारी जंग लड़ रहा हूँ, मैं तुम्हें आके रोटी भी दूंगा, जॉब भी दूंगा, कपड़ा भी दूंगा, तो भाई मैं मुझे तो ये है ना कि मैं एक दो साल इसके लिए लड़ता हूँ। अपनी जिंदगी के लिए मैंने पूरी जिंदगी काम किया, मुझे आज तक कुछ नहीं मिला, मैं एक दो साल इसके लिए लड़ता हूँ, उसके बाद मुझे ये जॉब देगा, मेरे लिए तो वो मसीहा बन के आ गया ना। तो मैंने उसे कहा भाई पंजाब में एक बंदा क्यों इसके लिए लड़े, जब उसके बाद जॉब भी है, वो उसके घर में रोजाना रोटी भी पक रही है, वो क्यों अपने आप को जेल में दे? और मैंने कहा अगर और अगर अगर खैबर पख्तूनख्वा में रोटी या अवाम अवाम को पानी नहीं मिलता उनके हिस्से का, या अवाम को रोटी नहीं मिलती, या अवाम को इंफ्रास्ट्रक्चर उनके हिस्से का नहीं मिलता, तो उसका जिम्मेदार कौन है? वहां पे 15 साल से हुकूमत भी तो इमरान खान की है, ये भी चौथी बार हुकूमत बन गई है, और ये कहते हैं हम पंजाब को चेंज कर देंगे। तुम्हारे से 16 साल में खैबर पख्तूनख्वा आज नहीं चेंज हुआ, जो आधा जिला है, जिसकी आधी आबादी है पंजाब से, और तुम कहते हो हम पंजाब को भी चेंज कर देंगे। इनसे हुआ होता होता कुछ नहीं है, बातें सिर्फ करनी आती हैं, और ये अपनी बातों में पॉलिटिक्स करते हैं, और अवाम इतनी जाहिल है जो बातों में आती है, और अवाम कहती है एक बारी फिर जरदारी, और उस तो बाद एक बारी फिर इमरान खान। मतलब कोई सेंस बनाओ, कोई अपना इंटेलेक्चुअल लेवल ऊपर करो कि तुम्हें पता हो कि सियासत किस तरह चलती है। तुम कहते हो जी हमें शऊर दे दिया, और ये एक बंदे के झांसे में आने को शऊर कहते हैं, और ये शऊर इस चीज को कहते हैं कि ये एक एक इंसान के लिए अपनी जान देने को तैयार है, और ये उसे शऊर कहते हैं। वो इनका जो शऊर था वो भी इनसे ले लिया गया है, और इनकी बदकिस्मती ये है कि इन्हें ये भी नहीं पता कि इनसे इनका शऊर ले लिया गया है। इनकी जंग ये नहीं है कि हमने पाकिस्तान को ताकतवर करना है, इनकी ये जितने यूथी हैं इन सब की जंग ये है कि हमने इमरान खान को बाहर लेके आना है। जिनकी जंग पाकिस्तान है ही नहीं है। तो ये सेम ही है, मतलब जिस तरह एक बंदा है, कोई भी बंदे को अगर पुलिस पकड़ ले, तो वो बंदे कहेंगे भाई हमें नहीं फर्क पड़ता कि ये क्या है, इसने क्या किया, हमें बस इसे बाहर दे दो, तुम मुल्क भी खा जाओ, ये खा जाओ। यार ये नहीं होता, इस तरह नहीं होता। अवाम की जंग ये है कि बस जी साडा बंदा वजीर आजम बना दो, साडे बंदे नु अपना बूट चटन वाला बना दो। भाई अवाम, मुझे इसलिए ना, जब मुझे एक बंदा कहता है ना हमें शऊर दे दिया, वो मुझे उससे बड़ा जाहिल इंसान कोई नहीं नजर आ रहा होता, उसी उसी बंदे के अंदर जिसे शऊर मिल गया। तो इसलिए ना, एक बंदा हो ना जो पॉलिटिक्स ना समझता हो, जिस तरह मैं एक दिन गया था अपने बाजार में सीमेंट लेने के लिए, तो उस क्या? बन सीमेंट लेने गया था खुला 2 किलो। तो मुझे ना उस बंदे ने कहा कि यार मेरी दुकान पे शॉपर ख़त्म हो गई हैं, तो ना इस तरह का शॉपर ले आ। वो किराने की दुकान से 1 किलो शॉपर ले आ, पता नहीं आधा किलो का था या 1 किलो का था।
तो मैं तो इस सीमेंट उसी में डाल दूंगा। मैं चल सही मैं लेके आता हूँ। मैं उधर गया, एक बंदा बैठा है जी, ओके जी वोट की को देना है, वो आखे जी वोट दे दो पाकिस्तान को। मैं कहा यार मतलब पाकिस्तान ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿस्तान ਕੌਣ ਹੈ। ਪਾਕਿस्तान ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿस्तानी ਆ। यार वोट इस बारी ना एक बारी इमरान खान को दे दो। मैं कहा क्यों दे दिए वोट जी इमरान खान ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ यार उस बंदे बड़ा कम ਕੀਤਾ। मैं बड़े कम ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ बड़े कम ਕੀਤੇ ਆ। मैं कहा ਮੈਨੂੰ 5 ਕੰਮ ਦੱਸ ਦੋ। ਆ ਅੱਛਾ 5 ਕੰਮ ਦਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ 5 ਕੰਮ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ बेकारी थोड़ी बनाना है, आवाम ने तो रोजगार देना है। मतलब ये कोई मुल्क का तुमने कोई भला तो नहीं किया कि तुमने वो बना दिए। और वो भी इन्होंने अली पता है किस तरह बनाए थे। सैलानी वेलफेयर है, सैलानी वेलफेयर, उस पे सारा रोटी पानी सारा वो करते हैं, खर्चा सारा वो करते हैं। इन्होंने सिर्फ उन्हें जगह दी है, बिल्डिंग दी है, उसके अंदर जितना खर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट कौन ले रहा है? इमरान खान ले रहा है। और अगर तुमने इस चीज पे वोट देना है तो जिसकी सलानी वेलफेयर है उसे दो, अल्लाह, या जेडीसी वाले को दो जो इतना काम कर रहे हैं, इतनी फ्री स्टडी दे रहे हैं। उनके लिए कॉलेजेस जाके देखो, अल्लाह के बंदे एसी एसी में बच्चे फ्री बैठ के पढ़ रहे होते हैं, और क्वालिफाइड टीचर्स जो बाहर से आए होते हैं उन्होंने वो रखे होते हैं। तो लेकिन नहीं जी, इमरान खान ईमानदार है। मैं कहा मेरे मोहल्ले का जो इमाम है ना बहुत ईमानदार है। वोट दोगे ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚੋਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜ ਵੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਲੜ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ 5 ਕੰਮ ਤੇ ਤੂੰ ਗਿਣਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ कहना वोट दे दो, पाकिस्तान ਨੂੰ वोट दे दो। ऐसे फिर उधर जो बंदा बैठा हुआ था ना उसने कहा था यार देखो मैं वोट देता हूँ नून लीग को, और मैंने इसे रीजन भी बताई है कि भाई मैं इधर बैठता था इलीगल पेट्रोल, और मुझे पुलिस आगे उठा के ले गई। मैंने पुलिस को कहा मेरे से 10,000 ले लो, मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं छोड़ना। कहता मैं उधर गया, मैं जजे की कॉल कराई, पुलिस मेरे घर तक फ्री छोड़ के गई है, और मेरे मेरे 10,000 भी बच गए। कहता अब मुझे बताओ मैं उसे वोट क्यों ना दूं? तो मेरा यार मेरे मुश्किल में वो काम आया मुझे। कहता मैं खुद इलीगल बेच रहा हूँ पेट्रोल, मुझे क्या फर्क पड़े पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा लेकिन मेरे जो मुश्किल काम है बंदा काम, मैंने उसे वोट देना है। कहता चलो मेरे पास रीजन है ना वोट देने की, इस जाहिल के पास तो रीजन भी नहीं है वोट देने की। ये सिर्फ इसलिए वोट दे रहा है क्योंकि इसके पास वोट है एक इसके पास एक एक्स्ट्रा वोट है, और इसे वो वाला वोट देना है किसी को। नहीं, सही बात है। मैंने तो इस दफा इलेक्शन में किसी को भी वोट नहीं दिया अभी अपने इलाके में। अली यार तुम्हारे बलोचिस्तान के भाई बंदे वो बड़े हैं यार, गद्दार बड़े हैं। हम्म, अल्लाह के बंदो पैसा लेते वो हैं, कहाँ बजट लेते रहेंगे? हैं, सारे खुद खा जाते हैं हरामी। तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें ना तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं यार, वो वडेरा यार निजाम है कुछ यार। भी ना करे लेकिन ये माहौल मतलब खराब नहीं करे ना। ये सब इतने हरामी हैं। एक एमपीए के लिए यार इस दफा सिर्फ एक मोहल्ले से तकरीबन 9 बंदे खड़े हुए थे एक एमपीए के लिए। अभी तुम ही बोलो यार, एक एमपीए एक सीट किसको मिल जाए? हाँ। इतने मतलब क्या बोलना, इतने बेईमान लोग हैं कि अपने मतलब बेइत्तेहाद बेइत्तेफाक, इतने बेइत्तेफाक लोग रहते हैं इधर। कोई वजह ही नहीं है इन लोगों को वोट देने के लिए, तो क्यों अपना वोट जाया करें? वही अली उससे मैं वो बताऊं कहते हैं कि तुम्हारा ना, अपना वोट क्योंकि मैं ना पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहा हूँ कुछ 4 साल 5 साल से, जब से इमरान खान बना था ना, क्योंकि मैं भी एक दौर में बड़ा इमरान खान का यार फैन था। तो हमें इस तरह लगता था कि भाई इमरान खान आ जाएगा, आज़ादी मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो फिर हमें बाद में पता चल गया जितनी की आज़ादी मिली हमें। तो ये था कि हम हर बजट में देखते थे कि पैसा ना, एक बजट होता था, आई थिंक 760 करोड़ था बजट था जब मैंने देखा था बलूचिस्तान का।
उसमें यूनिवर्सिटीज बननी थी, उसमें रोड बनने थे, लेकिन वो वाले रोड बने हैं, यूनिवर्सिटीज बनी हैं, लेकिन वो सिर्फ पेपर पे बनी है, वो सही बात। एक्चुअल में उधर एग्जिस्ट नहीं करती। तो वो वहां पे जो बंदे होते हैं जिन्होंने उसे वो डन करना था, हाँ जी ये बन गया, वो बंदे खुद रिश्वत लेके यार उसे डन कर देते हैं बिना बने। ये मसले बड़े हैं यार उधर। हम्म, मैं कहता हूँ, मैं हाँ हाँ। जिस सिटी में भी गया हूँ ना, मैंने खैबर पख्तूनख्वा का, बलूचिस्तान का स्टूडेंट देखा है, हर जिले में, हर जिले में, हर यूनिवर्सिटी में। हमारे भावलपुर की यूनिवर्सिटी में मेरा पढ़ने को दिल नहीं करता, वहां पे भी कोई 10,000 स्टूडेंट जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा के, और मैं सोचता हूँ कि यार इनके पास आईयूबी की तरह की भी यूनिवर्सिटी इन्हें हमारी हुकूमत ने नहीं दी, और ये 800 या 1000 किलोमीटर सफर करके इधर पढ़ने आए हैं। इन्हें इतना भी नहीं दिया हुआ कि ये आईयूबी में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। अगर आईयूबी तरह की भी यूनिवर्सिटी उधर होती तो ये क्यों अपना घर छोड़ते। सही बात है। और इधर की डिग्री का ना कोई वैल्यू है, ना इधर कोई सही बस सिर्फ कॉलेजेस पांच है, परसेंट तुम्हें पता कोटा है। दे देते हैं और कहते हैं जी हमने बड़ा एहसान कर दिया तुम्हारे पे, जबकि इन्हें 5% कोटा खत्म करके इन्हें अच्छी यूनिवर्सिटीज दो भाई, वो खुद मेरिट पे आए। उन्हें क्यों 5% कोटा चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए कोटा, तुम उन्हें यूनिवर्सिटीज अच्छी दो, वो मेरिट पे आए। और सही। मसला ये है ना, पाकिस्तान में मेरिट पे वजीर आजम नहीं आता तो स्टूडेंट किस तरह वो छोटे लेवल से अगर मेरिट पे आने लग गए बंदे, तो वजीर आजम किस तरह मेरिट पे आएगा इधर। हाँ यही बात। बस छोड़ो भाई ये सियासत वगैरह को। बस मेरा तो अपना भी कभी कभी प्लान बनता है पॉलिटिक्स में आने का। अल्लाह के फायदा बंदे, नहीं है मैं पॉलिटिक्स। मैं 4 दिन बहुत ज्यादा एक्टिविस्ट रहा हूँ ये बलूचिस्तान का। मुझे बचपन से यार सियासत से इतना चिढ़ है ना। जब कोई कोई भी यार इवेंट मेरा दिल वगैरह करता होता है है, तो मैं मेरा दिल उससे करता है दूर कि यार, रहना चाहिए। मेरा दिल करता है कि लोगों की हेल्प की जाए, उनके यार हकूक दिए जाएं। और सियासत तुम्हें पता है सियासत का नाम क्या है? सियासत झूठ का नाम है। अगर तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता अली तो तुम ये ना सियासत में क्या हमारी करोगे? सियासत को इन्होंने झूठ बना दिया है, जबकि सियासत यार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो की है ना, एक मस्जिद के मसल्ले पे बैठ के। तो हजरत यार एक मासूम और एक अवाम में बहुत फर्क है। वो लोग चलो मासूम थे, उनके हम बाद मासूम उनके नहीं है। बाद उनके बाद हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत हजरत उमर के दौर में 32 लाख मुरब्बा मील की सल्तनत थी। हम्म, मैं ये कहता हूँ कि ये गलत नहीं है, लेकिन जो बना दिया गया है ना, अब पाकिस्तान में सियासत, जिस तरह हम कोई 2 नंबर बंदा हो ना, हम कहते हैं ये बड़ा सियासी बंदा है। हम्म, सियासत 2 नंबरी की मिसाल बन गई है। क्यों? और इसे खराब किसने किया? हमने हम्म। किया। इसे खराब किसने किया? नहीं, जरदारी की नए तुम्हें कपड़े पता पहन है के ना जिस मतलब शहर में इधर जाता है अगर ना, तुम, हाँ, पता लग जाता है कि भाई अगर यहाँ तुम से मतलब बंदे टूट सियासत गए। में आए हो, एक बात है ना, अगर तुम सियासत में आए हो और तुझे चूतिया बनाना नहीं आता तो तुम सियासत में जीतोगे कैसे? इधर मतलब ऐसा रूल है कि तुम अगर तुम्हें अगर झूठ बोलना नहीं आता तो लोग सच से चिढ़ते हैं। अली मैं तो सच एक और सुनना बात ही नहीं बताऊं, चाहते मैं। ऐसा। पाकिस्तान में ना ना सच्चा जीतता है ना झूठा जीतता है। पाकिस्तान में वो जीतता है जो बूट को अच्छा समझता है। पाकिस्तान में सच और झूठ की सियासत तो होती ही नहीं है, इधर तो होती है बूट की सियासत। हम्म, वो जिस तरह मैं देख रहा था, वो शबाज शरीफ, वो वजीर आजम बना, उसे आर्मी चीफ ने सलूट मारा एक हाथ से, शबाज शरीफ ने आगे 2 हाथों से सलूट मारा है। भाई तुम देखो कि एक 22वें ग्रेड का अफसर तुम इसे 2 हाथों से सलूट मार रहे हो, जिसने तुम्हारे नीचे काम करना, मतलब आईनी तौर पर तो उसने तुम्हारे नीचे ही काम करना है ना। तो अब नंबर्स वगैरह देखते हैं न्यूज के क्या बनता है। ट्रेड ट्रूड तो कोई नहीं लूंगा मैं।
ट्रेड तो कोई है भी नहीं। नहीं, न्यूज़ का कह रहा था, न्यूज़ पे भी ट्रेड नहीं लूँगा मैं। हम्म, हाँ। क्योंकि ये ना डीएक्स ट्रेड मज़ा नहीं कराता यार, तो फ़ायदा नहीं है। क्यों? तो सी ट्रेडर पे रिक्वेस्ट करना उसको। उनका सी ट्रेडर है ही नहीं है, और सी ट्रेडर में मेरे पास वैसे एक अकाउंट है, तो मैं कहता हूँ सही है, सी ट्रेडर उसका यूज़ करेंगे। क्या? यार कोई आईसी मार्केट के साथ करे यार राब्ता, आईसी मार्केट ला के दे हमें, अल्लाह के बंदे 0.5 भाई पिप स्प्रेड के फर्म को साथ जब देखो, ट्रेड और करे। आईसी मार्केट, भाई आईसी मार्केट का लिक्विडेशन सिर्फ 1 बिलियंस में है यार। तुम समझते हो कि ये प्रो फर्म सब आईसी मार्केट से मतलब कोई डील करेंगे? आईसी मार्केटिंग के साथ कोई डील नहीं करेगा। हाँ, आईसी मार्केट इन्हें कहाँ सुनता है। आईसी मार्केट अपना बड़ा क्लाइंट है, $1 बिलियन कंपनी है, वहाँ की, ऑस्ट्रेलिया हाँ भाई। रजिस्टर्ड है ये। अच्छा, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया रजिस्टर्ड हम्म, जितनी कंपनीज है ना भाई, ऑस्ट्रेलिया रूल्स एंड रेगुलेशन का बहुत पक्का है यार। हम्म, तो हम सही ट्रेड बात। तो नहीं लेंगे, लेकिन हम एंटिसिपेट करेंगे आज। देखते हैं कि मूव कैसा आता है और नंबर्स कैसे आते हैं। अगर नंबर्स बहुत फर्क आए तो शायद मैं लूँ तो कुछ। नंबर का मुझे नहीं लगता बहुत फर्क आएगा, नंबर सेम उस तरह के होंगे। हम्म, वैसे भी मैंने एक और चीज़ जो नोटिस की है ना, वो ये है कि जीए जो है ना थोड़ा लेट ही मूव करता है हर बार। हम्म, अच्छा जी, हमारी न्यूज़ होगी यहाँ से, जीबीपी क्लेमेंट कहाँ से स्टार्ट होना है, क्लेमेंट काउंट रेट 4%, ये नहीं देखनी, क्लेमेंट काउंट चेंज देखनी है, एम्प्लॉयमेंट चेंज देखनी है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाली कहाँ है, 3.8, या, और ये पहले मिनट में इसकी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, इसका वेट करना चाहिए अच्छे वाले पुल बैक का, क्योंकि ये हमेशा पुल हम्म। बैक देता होता है चीजें, और तगड़ा पुल बैक देता है। और इसका जो मूव है ना वो वन जी जी। मिनट में, पहले वाले 1 मिनट में हो जाता है। हम्म, सो वी हैव 43 seconds लेफ्ट। 53 या 10? नहीं, 5 seconds लेफ्ट। हाय। ओके, हेलो भाई मार्केट। numbers are good, one numbers are good, these may go up, like, but not like rapid, because बाकी नंबर शो हो जाएं। पहला मुझे लगता नंबर है सेम है। पहला नंबर गुड है, मुझे लगता है नंबर मिक्स आ जाएंगे। गोल्ड भी 15 बुलिश क्लोज होगी, रिजेक्शन हो रही है सेम लेवल से गोल्ड की, तो जीजे के बाकी नंबर नहीं शो हो रहे मुझे। फॉरेक्स एक्टिव पे मुझे आ भी गए नहीं हैं? श्योर है, सब पेंडिंग में आ रहा नहीं, एक है। ये नंबर तो पेंडिंग 16 में आ आ रहा रहा है ना ऊपर वाले, वो मिक्स ही है, मतलब बाकी। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो नेगेटिव आ गई है, तो है। ये क्लेमेंट काउंट 16,000 आ रहे हैं, तो ये नंबर बैड है, तो चीजें को नीचे जाना पड़ेगा। नहीं नहीं एंटिसिपेशन 20 के हैं। नहीं, इसके इसके नंबर अगर ज्यादा होंगे तो वो बैड होंगे, कम होंगे तो गुड होंगे। दो नंबर बैड हैं, एक नंबर गुड है, हाँ सही है सही है। नंबर मिक्स हैं, फायदा नहीं है। अभी नजर आ गए होंगे नंबर, हाँ हाँ हाँ, वो थोड़ा नंबर्स गुड हैं। नीचे क्यों जा रहा है फिर? ये वीक अप वीक डाउन करेगा ना। अबे यार चल रहने दे इसे बस। मैं भी चलो सीपीआई में डिस्कॉर्ड पे आ सही। बात सीपीआई करते हैं में डिस्कॉर्ड पे। हाँ इंशाल्लाह।
30 again देखते हैं क्या rejecting मिलता है. from the same area. चलो उस्मान ब्रो अपना ख्याल रख, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं. हाँ मैं भी थोड़ी देर में ना दुआओं ख़त्म में कर याद दूंगा रखना. स्ट्रीम। हाँ भाई मैं थोड़ी देर में स्ट्रीम ख़त्म हाँ करके आप कुरान पाक पढ़ते हैं यार। भाई इस महीने में ना हाँ. अल्लाह ताला की इबादत करो, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, गुनाहगार आदमी है। चल सही है अली, ओके चलो ब्रो अल्लाह. अल्लाह हाफिज़। Yeah, look at this man. Yeah, because numbers are mixed. But two numbers are bad. Two numbers bad mean it has to go down. Yeah, one numbers are good. You can look for this thing on 1 minute because we will come up to grab some liquidity. Gold 15. Okay, man. So looks like we don't wanna. Okay, yeah, we may see this kind of close bearish, but man, I'll call it a day in just. Yeah, we are rejecting from the same area. Yeah. Let me see one thing over here. How much spreads do we have? So we can see clearly we have like 1 pip, 32. We have less than a pip spread. 38. Yeah, we have less than a pip spread. Half pip, less than a half pip, 0.3 pip.
Yeah, this is actually good spread, man. Like sometimes we don't have any spreads on IC markets. That is why I always like IC markets. So I think we should call it a day now because there is nothing for us